Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this lecture, we will mostly cover about the mesh analysis and node analysis. There are two techniques to solve any network or circuit. You have also seen the difference between network and circuit. Okay. Every circuit is called as a network, but every network may or may not be circuit. Circuit must have closed path. Okay. Circuit must have closed path so that the current must flow through all the elements connected in the closed path, right? But in network, suppose there are some closed path in the network and some unclosed path also, where some elements are connected, and in that element the current will not flow because the circuit not completed. Okay. So for example, if we see a circuit where there is a voltage source, there is resistance, here also there is resistance, this is also resistance, and here the network is open. V R1, R2, R3. So can this network be called as a circuit? No, sir. No. What is the reason? Not closed. Yeah, Second one is not closed. because it is not fully closed. Okay, means there are no all closed path in the network. This is a closed path. We can see clearly this is a closed path, but this one is not closed path. Means here, due to the open circuit, there will be no current in this resistor R3. I is equal to 0 in this resistor R3. So that's why this type of network will not considered as a circuit. Okay. Circuit must have all closed path. Means there must be current flowing through the all elements, right? Okay. So now we will move towards the first method, that is mesh analysis or mesh current method. So after that, KCL, KVL. We have circuit solving techniques. First, we can see that Kirchhoff's laws. In Kirchhoff's laws, we have seen KCL, KVL. Okay. Second one is mesh analysis, mesh method, or mesh current method. Third one we will see node method. Node method or nodal method. It is also called as node voltage method. Okay. After that, we will have some network theorems. In that network theorems,
Firstly, we have to see about superposition theorem. Then Thevenin's theorem. Then Norton's theorem. Norton's theorem. After that, maximum power transfer theorem. Okay. So we have completed Kirchhoff's laws, KCL and KVL. This was just a review or recap for you because you have already studied previously. These three methods will be for your it will be new for you. So we will start one by one. Okay, so first method, in fact, third method is mesh method. In mesh method, what we have to do? We have to identify the number of loops or meshes. Loops means meshes because it is a mesh method, and you know that the difference between mesh and loop. Okay, mesh is a type of loop which does not have any other loop inside. Okay, so we have to identify the number of loops or number of meshes in the circuit. Then we have to denote loop currents, and usually we denote loop currents in the direction of loop currents we will consider in clockwise direction. So the direction will be clockwise. That will be for the simplicity. We have to assume all direction of loop currents in clockwise. Okay. Then we have to find out. We have to apply KVL, Kirchhoff's voltage law, in the loops, and write KVL equations. So we have to write KVL equations. So as per the number of loops, there will be number of KVL equations. Okay. So number of loops will be equal to number of KVL equations. Okay. And that is equal to number of loop currents. Okay. So by solving the number of KVL equations, we can identify the value of loop currents, individual loop currents. Clear? There is a formula of number of KVL equations. Number of KVL equations is equal to number of branches that is B minus
number of nodes plus 1. Okay, so this is the standard formula, and that will define the number of loops, number of individual loops. That will be number of KVL equations. Okay, so number of KVL equations will be equal to B minus N plus 1. So B minus N plus 1 is the number of KVL equations. Clear? Am I audible to you? Yes, sir. Blank page is coming below. Okay. So as an example, we will take a circuit, simple circuit, where we will take a voltage source, some resistances, and in fact we have taken two sources, plus minus, plus minus. This value is 20 volt, 10 volt. Resistance values, for simplicity, we have assumed equal 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. So suppose this is a simple network, simple circuit. This network is a circuit also because it consists of a closed path, closed loop, and there are two closed loop. Okay, if we consider about the meshes, there are two meshes. Okay, so first we have to identify the number of loops or number of meshes. Okay, so how many meshes are there in this circuit? 2. 2, right? So we have to, what we have to do? First step is to identify the number of meshes. Then we have to make the direction, clockwise direction of loop currents, means we have to make clockwise direction of loop currents in both loops. Okay, this is loop 1, this is loop 2. Current we have assumed I1, and here we have assumed I2. Then what we have to do now? Next step is
What is the next step? Apply KVL. Apply KCL. Not KCL. KCL will be applied at the node. KVL. Yes. In the loop, we will apply KVL so that the algebraic sum of voltages, means source voltages and all voltage drop, must be equal to 0. Right? So you can also try, write down this circuit, and on copy you can make this the loop currents in the clockwise direction, denote the loop currents I1, I2 in two loops, loop 1 and loop 2, and then apply KVL individually considering individual loop. Okay, so in this node method, in this mesh method, first we will apply KVL in loop 1. KVL apply करिए loop 1 में. To apply KVL, please be careful while making the direction of voltage drops. Okay, we have to make the direction of voltage drop across the elements. We have taken resistive load for simplicity. Whatever the load is there, you have to make the direction of voltage drops. So in this branch, you can see that due to this loop current is flowing in this direction. So current I1 will be here, right? So what will be the voltage drop? How much the voltage drop will be there? 20 minus 5 I will. No. Across this 5 ohm resistance, how much voltage drop will be there? 5 I will. 5. Right. Very good. So what will be the polarity of that voltage drop? Where will Negative. be plus? Negative. यहाँ पे प्लस होगा या यहाँ पे प्लस होगा? सिर्फ पहले प्लस फिर माइनस. यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ Yes, माइनस, राइट? yes, sir. Yes, sir. यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा. क्यों ऐसा होगा? High potential to low potential current moves. We have seen in the literature that it is written that for elements across the voltage drop, means element across the voltage drop across the element, the polarity of voltage drop will be, the current will flow in that element will be from higher potential to lower potential, right? So it means plus will be here, minus will be here, so that this current I1 will flow in this element from higher potential to lower potential, right? Similarly, what will be the current in this branch? 5 ohm. 5 ohm में कितना करंट होगा? 5 ohm में कितना करंट होगा बताइए? I1 minus I2. minus 5 I1 minus I2. So I1 minus. yes, इसमें क्या है कि दो करंट आ रहे हैं, राइट? एक तो I1 इधर से आ रहा है और दूसरा I2 यहाँ ऊपर जा रहा है ना? फर्स्ट लूप का करंट I1 है, दूसरे लूप का करंट I2 है. So this I1 is coming from upper to lower, I2 is going from lower to upper. So how much the current will be there across, through this 5 ohm resistance? The difference between these two currents, right?
तो जो भी ज्यादा होगा, अगर I1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो I1 माइनस I2 होगा, अगर I2 ज्यादा होगा तो I2 माइनस I1 होगा, राइट। सो जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, रिजल्टेंट करंट, राइट। सो यहाँ पे हमको एज्यूम करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम टू अप्लाई KVL दैट I1 is dominating, I1 is greater than I2. In that case, for simplicity, the voltage drop will be plus here minus here, क्योंकि रिजल्टेंट करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो प्लस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा, क्लियर। और रिजल्टेंट करंट का वैल्यू होगा I1 माइनस I2, समझ में आ रहा है? Okay, is it clear to all of you? Or Yes, sir. if there is any doubt, you can ask. Because there are two currents across this 5 ohm resistance, through this 5 ohm resistance, I1 and I2. So the resultant current will be the algebraic sum of both currents, I1 and I2. We can see here that the direction of both currents are opposite. So we have to make assumption that one current is higher than other. Okay, so we have taken assumption that I1 is greater than I2. So in that case, if I1 is greater than I2, the overall current, resultant current will be in the downward direction. So that's why for voltage drop, plus will be upper, minus will be lower. Clear? So now we can see that in first loop, we have denoted all polarity. So now we can apply KVL. So by applying KVL, if we start at this point, so we have seen that for passive convention, if we are going from negative to positive, we will take positive. If we are going from positive to negative, we will take negative. We can take other also, no issues. In some books you can find, if we are going from positive to negative, they are taking positive. If we are going from negative to positive, they are taking negative. So that is also fine, because ultimately we are making the algebraic sum of all voltages and we are equating to 0. Okay, so there will be no any issue, there will be no effect of result. Okay, so we are starting at this point. I am starting from this point. Initially we are getting minus, then we are getting plus. So minus to plus we have taken positive, plus 20. Then we are getting plus, then minus. So we will take minus 5 I1. Then in this branch, first we are getting minus, then we plus, then we are getting minus. Again it will be minus 5 into the resultant current will be I1 minus I2, because we have assumed that I1 is greater than I2. So that will be 0. Okay, as per KVL. Is it clear to all of you? Is this equation clear to all of you? If there is any doubt, you can ask straight away. सर इन हाँ? इसमें 5 I1 I2 जिसमें गया है, हाँ, जब दोनों लूप लिखेंगे तो I1 I2 अलग दोनों में नहीं लिख सकते, मतलब पहला लूप के लिए सिर्फ I1, दूसरा लूप के लिए सिर्फ I2। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम जो करंट एज्यूम कर रहे हैं वो I1 इस लूप में है ना, और I2 इस लूप में है। सो ये जो ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है दोनों लूप में, राइट? यस सर। दोनों लूप में ये ब्रांच कॉमन है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से I2 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस ब्रांच में जो रिजल्टेंट करंट होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा ना। हाँ सर। तो I1 माइनस, या तो I1 माइनस I2 हो सकता है, या I2 माइनस I1 हो सकता है। मतलब जो भी बड़ा होगा, जो भी जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा,
उसी डायरेक्शन में रिजल्टेड करंट फ्लो करेगा, सिंपल है ना। ठीक है, सो देन वी विल सॉल्व इट। 5I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। इट मीन्स 10I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 20। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, then we will apply KVL in loop 2 and we will get another equation. Apply KVL in loop 2. So loop 2 में KVL अप्लाई करेंगे। इसमें हमने करंट का डायरेक्शन ले लिया है कि I1 हमारा ग्रेटर है। So voltage polarity we have already assumed in this branch. For this branch we have to make the direction of voltage drop. I2 यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। So where it will be the positive and where it will be minus negative. वोल्टेज ड्रॉप यहाँ प्लस होगा कि यहाँ प्लस होगा? कहाँ पे? माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा इस पॉइंट पे? I2 के पास माइनस है। I2 के पास माइनस आएगा, कैसे? इस I1 वाले से, इस I1 के डायरेक्शन से ये अलग है क्या? सेम डायरेक्शन में है ना। एलिमेंट्स में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। इट मीन्स पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये तो डेफिनेशन में है, राइट? So the polarity will be plus here, minus here, because this is an element, and in that element the current direction will be from higher potential to lower potential. So higher potential means plus here, lower potential minus here. Okay, clear है? Yes, sir. Okay, now we can apply KVL in this loop. So I will start at this point. पहले फर्स्ट वाले लूप में यहाँ से स्टार्ट किया था, सेकेंड वाले लूप में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इनिशियली वी विल गेट नेगेटिव देन पॉजिटिव, so it will be plus 10, then we are getting negative then positive plus 5I2, then plus minus 5I1 minus I2, that is the same as per the previous equation. Okay, ये क्लियर है? Is there any doubt in this equation, KVL equation in loop 2? We have started at this point. Initially we are getting minus, then plus, so it will be plus 10. Then we are getting minus, plus, it will be plus 5I2. Okay, then we are getting plus to minus, then it will be minus 5 into I1 minus I2. Clear? Yes, sir. तो
5i1 minus 5i2 minus 5i2 इज इक्वल टू 10 होगा। इसको हम राइट साइड भेज दिए, इसको भी राइट साइड भेज दिए। ओके, एक साइड पे वेरिएबल, एक साइड पे कांस्टेंट। सो 5i1 माइनस 5i2, 5i1 माइनस 5i2, और इसको भी इक्वल के आगे भेजे हैं तो -5i2। ये हो जाएगा 5i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 10। ओके, सो इट मीन्स 5 को हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं। i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। Now we have two equations in terms of I1 and I2, and we have two variables. If we want to find out the loop currents, we can easily get by using two equations, equation 1 and 2, right? So what will be the final value of currents, loop currents? First, what we will do, we will eliminate one at a time. So to eliminate I1, we will multiply equation 2 by 2, and then we will subtract from first equation to second equation. So first minus 2 into equation 2, that will give you 2i1 minus i2 is equal to 4. equation 2 हो जाएगा 2i1 minus 4i2 is equal to 4, right? सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ कट जाएगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 3i2, 4i2 minus i2 is equal to 3i2, that is equal to 0. It means i2 is equal to 0. i2 में करंट जाएगा ही नहीं। Then by putting the value of i2 in any equation, equation number 1 or 2, we can get the value of i1. So i1 will be 2 ampere. By putting i2 is equal to 0 in equation 2. ओके, i1 is equal to 2 एम्पियर। इक्वेशन 1 में भी अगर करेंगे तो i2 is equal to 0, 2i1 is equal to 4, it means i1 is equal to 2. So i1 2 ampere, i2 is equal to 0. It means there will be no current in this 5 ohm resistance and this 10 volt source. Okay, so i2 is equal to 0 means current will flow in this branch only. The same problem we will identify, we will solve by using the next method, that is nodal method. Okay, and we will verify our result. सर Yes, सर लूप 2 के अंदर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सर पोटेंशियल में से ड्रॉप हो रहा है। फिर सर आपने सर पॉजिटिव कैसे लिया है? सर नेगेटिव होगा कहाँ पे? ना सर? लूप 2 के अंदर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, तो सर हम उसको नेगेटिव लेंगे ना? सेम ये इक्वेशन 10। सेकेंड वाले लूप में केवीएल अप्लाई हाँ कर, यस सर। सेकेंड वाले लूप में केवीएल अप्लाई करने से रिलेटेड है प्रॉब्लम। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, लूप 2 के अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो सर इसमें जो पोटेंशियल है सर वो सर
उसमें ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, तो सर तो नेगेटिव लिखेंगे ना, -10। नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। ओके, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, वापस हम इस पॉइंट में आ जाएंगे। हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किए हैं, अभी हम क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, सेम मिलेगा। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, सो आप बताइए कि क्या होगा इसमें, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा। तो 5 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, लूप 2 में। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले माइनस मिला फिर तो प्लस। ओके सर। पहले माइनस मिला फिर प्लस मिला, क्या होगा एज पर आवर तो कन्वेंशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव 5 इंटू I1 - I2, राइट होगा। यस। उसके बाद हमको प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिला, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे। -10। माइनस -5 I2 ना, पहले 5 I2 होगा, राइट। उसके बाद यहाँ प्लस से माइनस है, फिर -10। 3 ही एलिमेंट था, वापस हम यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू 0 होगा। ओके सर। तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेके हटा देते हैं, सो क्या ये सेम नहीं हो गया? 5 I2 - 5 I1 - I2 इज +10 इज इक्वल टू 0 हुआ। यस सर। यही तो हमने लिखा था, +10 + 5 I2 -5 I1 - I2। चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, हमको सेम इक्वेशन मिलेगा। अगर हमने केवीएल सही लगाया है, वोल्टेज ड्रॉप सही एज्यूम किया है, तो मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर? ओके। सेम प्रॉब्लम को हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट मेथड से। आवर नेक्स्ट मेथड इज node method. So in node method, what we have to do, we have to identify number of nodes in a circuit, then make one node as a principal node or reference node. So reference node किसको लिया जाता है? reference node उसको लिया जाता है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे। ओके, मीन्स maximum number of branches connected, that will be your reference node. So firstly we have to identify the number of nodes in a circuit, कितने नोड बन रहे हैं। then we have to assume one node as a reference node, and reference node is a node where from where maximum number of branches are connected. Okay, and in most of the problems you can see that in the bottom of the circuit we are assuming as a reference node due to the maximum number of branches connected and for the simplicity also. So the reference node, the voltage at reference node will be treated as 0. Voltage at reference node is equal to 0 due to ground connection.
then we will apply KCL now. Apply KCL at remaining nodes. जो बचे हुए रिमेनिंग नोड्स हैं उन पे KCL अप्लाई करेंगे, राइट? सो नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस is equal to number of nodes -1. एक नोड कम हो गया क्योंकि एक नोड को हमने रेफरेंस नोड एज्यूम कर लिया, राइट? और जो बचे हुए नोड्स हैं उन्हीं पे केवल KCL अप्लाई कर रहे हैं. सो दैट्स वाई नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस विल बी n-1. So number of KCL equations is equal to n-1. सो KCL अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना है कि नोड्स पे नोड वोल्टेजेस भी एज्यूम करना है. तो यहाँ पे कहीं आप देख लीजिए, यहीं पे होगा एज्यूम नोड वोल्टेजेस इन ऑल नोड्स. सारे नोड पे नोड वोल्टेजेस को डिनोट करेंगे. सो दिस इज आवर प्रोसीजर. नाउ वी विल टेक सेम example just we have seen in our previous circuit. We have taken 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm resistances plus minus. Here 10 volt, 20 volt. Same है. I think I have made correct. 5, 5, 5, 20, 10. Okay. The same problem we have taken, and by this method also we will verify that the currents that we have calculated in the previous diagram by using mesh method, that we are getting the same or not. So how many nodes are there? How many nodes are there in this circuit? 4 sir, 4. सर्किट में कितने नोड्स हैं? 4 sir. ये नोड होगा, ये नोड होगा, ये नोड होगा, ये नोड होगा, ये भी एक 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 नोड होगा. So which one will be the reference node? सर ऊपर में जो बीच में अपर नोड बिटवीन लोअर वाला लेंगे तो फिर एक ही अननोन आएगा. हाँ, अपर वाला लेंगे, अगर अपर वाले को अगर रेफरेंस नोड मान लेते हैं तो यहाँ से भी 3 ब्रांच जा रहा है, इस वाले नोड से भी 3 ब्रांच जा रहा है. ओके. और मैंने बताया है कि the reference node is a node where maximum number of branches connected, और generally जो बॉटम वाला है उसको हम रेफरेंस नोड एज्यूम करते हैं. सो इट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज 0 है. दिस इज आवर रेफरेंस नोड. ओके. क्लियर? यस सर. और उसके बाद हमको KCL अप्लाई करना है. तो सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी, वी विल नॉट टेक those nodes where
करंट इज गोइंग सेम। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो करंट डायरेक्शन सेम होगा, करंट का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे भी करंट का वैल्यू सेम होगा, राइट, इन दोनों में। तो ये वाला नोड को और ये वाला नोड को लेने का कोई मीनिंग नहीं है, हमारा अननेसेसरी इक्वेशन ज़्यादा होगा। सो केवल एक ये प्रिंसिपल नोड को हम एज्यूम कर ले रहे हैं और यहाँ पे वोल्टेज हम V मानेंगे, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, राइट। वोल्टेज V एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और इसमें हम करंट डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि इस वाले ब्रांच में करंट जा रहा है I1, इस वाले ब्रांच में करंट जा रहा है I2, और अल्टीमेटली वो दोनों यहाँ से बाहर निकल रहा है, I3 मीन्स ग्राउंड को जा रहा है। ओके, हमें करंट डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको KCL अप्लाई करना है, राइट। सो वी कैन मेक एनी डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, एज पर आवर चॉइस। When we will solve the value of current, if current value will be positive, it means our assumed direction is correct. If the current value is negative, it means whatever we have assumed that direction is wrong, we have to reverse the direction. सिंपल यही होगा। अगर हमने जो एज्यूम किया है डायरेक्शन, अगर वो सही होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर हमारा डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ गलत था तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद, यही होगा बस। ओके, सो वी विल अप्लाई KCL एट दिस नोड 1, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे। I1 and I2 are the incoming currents, I3 is the outgoing currents. I1 plus I2 will be I3 as per KCL. क्लियर है? I1 plus I2 is equal to I3, right? अब I1 का वैल्यू, what will be the value of I1? I1 is equal to voltage difference divided by resistance. So voltage difference is 20 volt minus V, यहाँ पे V एज्यूम किया है, divided by 5. 20 minus V divided by 5, that is I1. What is I2? I2 में करंट का डायरेक्शन इस तरफ से है, so it means current will flow from higher potential to lower potential. So we will assume 10 volt as a higher potential. So 10 minus V divided by 5, that will be the I2. And what is the value of I3? I3 will be equal to V minus, here reference node voltage is 0, V minus 0 by 5. Okay, so we will put all these values in this equation. So 20 minus V divided by 5 plus 10 minus V divided by 5 is equal to V minus 0 divided by 5. Okay, so we can see that 5 is common to all, so we can simplify 20 minus V plus 10 minus V is equal to V. Okay, so here minus 2V, that can be sent after this equal sign. So 3V is equal to 30. It means V is equal to 10 volt. So means at this node we are getting 10 volt. So the polarity at this node, the voltage at this node is 10 volt. It means here 10 volt is already there. So I2, we can identify the value of I2, that is 0, because we have to calculate the value of I2, I1 and I3.
So I1 will be equal to 20 minus 10 divided by 5. That is 10 by 5 is equal to 2 ampere. I2 is equal to 10 minus V, that is 10 minus 10 divided by 5, that is 0 ampere. I3 is equal to V minus 0 by 5. So it means I3 is equal to 10 minus 0 by 5. 10 by 5 is equal to 2 ampere. So you can see that the value of I1 and I3 is 2 ampere. I2 is 0 ampere. Okay. It means I1 is here. I1, you can see that this is the same that we have obtained as a loop current. Loop current I1, that is same. It is coming same 2 ampere. Whereas I2 is the loop current in the second loop. I2 is coming 0. Okay. And the value of current I3 will be 2 ampere only because there is no current in I2. So I3 will be equal to I1. Clear? Yes, sir. Okay. So I have sent to you this PDF file of circuit concepts where KVL, KCL, mesh and nodal analysis is given. I have sent to you this PDF file already. Okay. Due to the complex circuit here, I have taken a simpler circuit for the understanding of your better understanding. So please try this. Try to understand these circuits. Figure 3 given for mesh analysis. For nodal analysis, you can see that figure 4 is given. So try to understand, please try to understand how we are applying KCL at the nodes in nodal method and how we are applying KVL in the loops in mesh method. Okay. So this is already given to you. Steps is also given here. Based on the examples, you can take one example at a time and you can solve and you can practice to apply mesh analysis and node analysis. Okay. If you will find any difficulty, I will be available for your help. Okay, anytime. So now attendance. Ashish Chandra, Abhya Chandra, Aditya Aris, Present, sir. Akash Srivastav, Present, sir. Akhilesh Sahu, Present, sir. Akshit Taneja, Present, sir. Anand Kumawat, Present, sir. Ankit Das, Present, sir. Apurva Raj, Arnav Kumar, Present, sir. Avinash Kumar Singh, Present, sir. Ayush Kumar Singh, Present, sir. Gaurav Tiwari, Present, sir. Ishant Singh, Krishna Gupta, Maitri Upal, प्रेजेंट सर इंद्र से जरा बंद करो अटेंडेंस लगाने Mudra Gupta, प्रेजेंट सर Pranjay Soni, प्रेजेंट सर Prachi Gautam, प्रेजेंट सर Prajwal Singh, Priyansh Raj, Present, sir. Yes, sir. Present, sir. Priyanshu Kumar, प्रेजेंट सर Pulkit Singh, Rahul, Rajiv Kumar Pandey, Rishabh Arya, प्रेजेंट सर Rishabh Arya. यस सर Okay. Rohan Kuntal. Then S. Rutik Sai, प्रेजेंट सर Saket Suman, Present, sir. Samya Kashyap, Sangram Chakravarti, Sasank Tripathi, प्रेजेंट सर Shubham Ranjan, प्रेजेंट सर Shubham Singh, प्रेजेंट सर
सृजन स्वरांकर, सुधांशु कुमार, प्रेजेंट सर। सुमित कुमार, प्रेजेंट सर। सुमित सिकरवार, सॉरी सुमित सिकरवार प्रेजेंट। हाँ यस। सुप्रिया, Present, sir. सूर्यांश वर्मा, प्रेजेंट सर। उज्जवल नयन, प्रेजेंट सर। उत्कर्ष कुमार यादव, Present, sir. वैष्णवी, Present, sir. यस। वेदांशी, विशाल वेशले, यस बावस्कर, प्रेजेंट सर। विशाल, विशाल present, sir. ओके ओके। वेदांशी, विनीता भाटिया, Present, sir. अर्णव कुमार, प्रेजेंट सर। संभवी श्रीवास्तव, Present, sir. शशि शेखर मिश्रा, ओके। एनी अदर? Sir, या so you didn't call out my name. Approve Raj. मैंने बोला था। सर आपकी आवाज ऐसे देख हो रही थी। अपूर्व राज, यस सर। ओके। पहले क्लास अटेंड नहीं किए क्या इससे पहले 2-3 दिन? सर करी है, सारी करी है। अरे तो बोला ही नहीं अटेंडेंस। नहीं अटेंडेंस सर। नहीं बोला पहले। कितना सारा किया क्या? हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। देन यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास इफ यू हैव। थैंक यू। थैंक यू।